everyone, a very good morning. I welcome you all to LaunchPad Education Punjab. Welcome to the KBC series whereby हम MCQs discuss करते हैं related to all the important various subjects. Modern history आपके काफ़ी MCQs cover हो चुके हैं. Polity के काफ़ी MCQs we have covered. Environment, Geography, Global Indices 2021 के सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स, बजट और इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर जितने भी MCQs इंपॉर्टेंट बनते थे वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी वीडियो अगर मिस की है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके ये सारी वीडियोस देख सकते हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम परस्पेक्टिव. ऑल्सो करंट अफेयर्स जो हमने कवर किए हैं नवंबर एंड दिसंबर के, एंड दिस वीक वी विल बी कवरिंग अक्टूबर करंट अफेयर्स एज वेल. मोस्ट प्रोबेबली ऑन संडे हम अक्टूबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे बिकॉज वी नो कि हमें पिछले 6 मंथ्स के एटलीस्ट करंट अफेयर्स कवर करके चलने हैं. ठीक है. अ वेरी गुड मॉर्निंग रॉली, मनदीप, राधिका एस पठानिया, जसकरण, अंजलि, जेएस वैद. ठीक है. सो इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीसीएस की नोटिफिकेशन आउट होगी, एंड फॉर दिस you should start preparing with LaunchPad Education. Batches have already started. You can attend the demo classes, weekend, weekday batches, online classes आप attend कर सकते हैं. ठीक है. Then best results and EMI option भी available है. ठीक है जी. Thank you for the reminder, Radhika. Okay, so start करते हैं. First MCQ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ drill ਪਤਾ ਹੈ. You will tell me the answers before I tell you, so that this becomes a test for you. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਰਹੋਗੇ, ਐਂਡ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਆਸਕਿੰਗ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ. ਫਰਸਟ MCQ, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, who was the first Indian to be appointed as law member of Governor General's Council? गवर्नर जनरल दी काउंसिल विच फर्स्ट लॉ मेंबर जो अपॉइंट किया गया सी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? ऑप्शन राजा किशोरी लाल गोस्वामी, मोतीलाल नेहरू, सत्येंद्र सिन्हा, एंड डी वी हैव इज तेज बहादुर सप्रू. ओके, सी वन आंसर डी भी आया है. जेएस वैद सेज डी. इट इज नॉट डी. आंसर इज सी, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल. ठीक है. 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत इंडियंस ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਨ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲਸ ਕਾउंसिल, एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन. करेक्ट. ओके. अगर ਤੁਸੀਂ अपनी एडिशनल फैक्ट्स, एडिशनल नॉलेज कमेंट्स ਵਿੱਚ शेयर करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट. अपने फ्रेंड्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन इज पॉपुलरली नोन एज कैबिनेट मिशन, हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, एंड डी साडे कोल है साइमन कमीशन. इफ यू आर रेगुलरली अटेंडिंग द लाइव्स तो ਇਹਦਾ आंसर ਤੁਹਾਨੂੰ पता होएगा. दिस इज अ रिवीजन क्वेश्चन फॉर यू. इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन पॉपुलरली ब्रिटिश रूल विच ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ओके, वी हैव गॉट द आंसर, साइमन कमीशन. साइमन कमीशन इंडिया विच किहड़े साल च आया सी? Was it 1926, 27, 28, 29? ऑप्शंस ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ. रिवीजन ਦੇ क्वेश्चंस ਦੇ फटाफट आंसर्स ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋਗੇ. साइमन एब्सोल्युटली करेक्ट है. डी, साइमन कमीशन is popularly known as Indian Statutory Commission during the British Raj, 1928. Correct. Okay. चलो, next question. Who among the following was the first law minister of India? India the first law minister. Jawaharlal Nehru, Maulana Abul Kalam Azad, Dr. B.R. Ambedkar, and D we have is T. Krishnamachari. डी टी कृष्णमचारी. बी आर अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर जी. करेक्ट. ही वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ओके, करेक्ट. चलो अगले क्वेश्चन थे. इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज द वन इन विच, फर्स्ट ऑप्शन, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट. बी ऑप्शन, गवर्नमेंट जेडी है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट. सी, गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम. गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर completion of fixed term. Read the questions. PCS क्लास दी कुछ सिलेक्टेड वीडियोस ऑफ कोर्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ कोशिश करांगे रमनप्रीत जी कि आप यूट्यूब पे प्रोवाइड कर सकिए.
लेकिन राइट नाउ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी क्लास फॉर PCS ऑन यूट्यूब, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ बैचेस एनरोल करना पएगा. यू कैन अटेंड द डेमो फॉर द क्लास एज वेल. ठीक है. सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ਨੂੰ बेस्ट ਕੀ डिस्क्राइब करता है? B. Okay, most of you the answer सही है. The government ਜਿਹੜੀ ਹੈ it is responsible to the parliament and it can be removed by it. parliament ही ਜਿਹੜਾ ਹੈ government ਨੂੰ remove कर सकता है. ठीक है. I think इस question में कोई confusion नहीं है. maximum of you have given the right answers. Next question. Consider the following statement related to secularism in India. India ਵਿੱਚ secularism ਨੂੰ relate ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ important facts ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ. You have to tell me the right statement. It entitles strict separation of religion from politics. Second है it bans parties with a religious affiliation from contesting elections. Third, it grants religious liberty to all the communities. Communities में religious liberty है. Fourth, it accepts community personal laws. B, यानी कि 1 and 2, 3 and 4. A. Okay, we are getting a mix of answers. 3 and 4. Statement related to secularism यानी कि सारे religions जड़े हैं they are equal in front of the government. सारे religions जड़े हैं they are given equal importance. या state जड़ी है अपना religion जड़ा है कोई भी declare नहीं कर दी. So strict separation of religion from the politics. First statement तो बिल्कुल correct है. It bans parties with the religious affiliation from contesting elections. Are you sure about this statement? Okay. Answer to this question is C, 1, 3 and 4. Religious affiliation ਨਾਲ contesting parties ਨੂੰ ban नहीं किया जाता. We all know BJP. It has an affiliation relating to Hinduism, right? So ban, absolute ban नहीं है. ठीक है? Okay. I hope this concept is clear to you. Okay जी, चलो. Let us move to the next part. Which part of the Constitution of India declares the ideal of welfare state? Very simple, very easy question. Welfare state de bare. There is no strict ban. Secularity means neutrality. ठीक है जी, I hope it is clear to you. जिन्हों तक doubt सीगा strict ban ना related. Pradeep says B, fundamental rights. We have got the answer DPSP as well. Okay. So welfare state ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? Directive principles of state policy. ਇਹ state ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ directions ਹੈ ਕਿ state while making the laws ਕਿਹੜੀ policies ਕੀ follow ਕਰੇਗੀ. Correct? So welfare state ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ DPSP, Directive Principles of State Policy. Let us move to the next question. Take a minute. List ਨੂੰ match करना है. Parts ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ finance, property, contracts and suits, union, judiciary, executive of states, relation between union and states. ਤੁਹਾਨੂੰ parts ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ. Parts I think the most ignored section है. ਆਪਾਂ schedules and articles ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ learn ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ठीक है जी. Here, these are the options in front of you. I'll move back to the first slide. Parts ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ match करना है. Okay. Parts are matched. There is a separation between religion and state. We all know separation, religious state ਦੇ ਵਿੱਚ and religious ਦੇ ਵਿੱਚ separation ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ. State अपना कोई particular religion declare नहीं कर रही. There is a separation. Please see to this fact. Okay. So go on. Parts the answers दो. Even if you know the union, judiciary and states ਦਾ part ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ easily match ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. Here are the options in front of you.
Do we have the answers yet? D. Okay. A 2, B 1, C 4 and D 3. Finance and property, part 12. Judiciary. Judiciary ਦੀ union judiciary ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ part ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? It is talked about in part 5. Okay. So here are the options. I think most of you the answer सही आया है. B 2 1 4 and then we have is 3. ठीक है जी? Okay. Let us move on to the next question. Before that, at 12 there is going to be a class related to polity only, SSC CGL. ठीक है, जिदे विच आपां कुछ basics, one liners, MCQs ਜਿਹੜੇ discuss ਕਰਾਂਗੇ at 12. So be present there on LaunchPad Education, the Hindi channel. ठीक है जी, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ basics concepts clear ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. Next question. Consider the following statement. The Indian Constitution is first an unwritten constitution, a written constitution largely based on Government of India Act 1935, a gift of British Parliament. Indian Constitution ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ statements ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ. It is a written constitution, unwritten, written largely based on Government of India Act, then it is considered as a gift of British Parliament. 2 and 3. Okay. Unwritten though exactly we can make out 2 and 3 statement correct. Take the written constitution and then largely it is based on Government of India Act 1935. Correct? Okay. Next question. The second schedule of Constitution of India does not contain provision as to who among the following: the President, the Speaker of the House, Comptroller and Auditor General, and D option साडे कोल है the Chairman, Union Public Service Commission. सेकेंड शेड्यूल की गल करता है. D, Chairman of Union Public Service Commission. Okay. Second schedule talks about what? What is second schedule of Indian Constitution related to? Let us revise the schedule. जिन्हों का आंसर D है, that is absolutely correct. The Chairman and Union Public Service Commission, UPSC the Chairman, is not included in the second schedule. Salaries are related है, absolutely correct, and ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ Union Public Service Commission the members are not included. Okay. Schedule 3 किहदे नाल related है? Let us revise the schedule for a minute. Schedule 2 ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ salaries ਦਾ. Schedule 3 किहदे नाल related है? And then Schedule 11 किहदे नाल related है? Okay, 3 is related to oath. Correct. 11 is related to 11 and 12. ओथ बिल्कुल करेक्ट है जी. अंजलि ठाकुर, मनदीप, ओके, राधिका पंचायत, करेक्ट. टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यस, दिस वाज द ट्रिक जो ਤੁਹਾਨੂੰ याद कराया ਸੀਗਾ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਵਾਸਤੇ. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन. लिस्ट ਤੁਸੀਂ मैच करनी है प्रोविजनस बोरो ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ गए हैं डिफरेंट कंट्रीज ਤੋਂ. फर्स्ट एमरजेंसी प्रोविजनस, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. Then match the following. Second list with Ireland, United Kingdom, USA, and then we have is Germany. And here are the options in front of you. Options dekh lo and then give me the answers. DPSP the simplest hai. If you can make out ki DPSP kitna related hai, then you will be able to answer. Rolly says C. Okay. C. पुलकित, रॉली, ओके, एस पठानिया, सी आंसर आया है करेक्ट. आई डोंट थिंक मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन देने की लोड़ है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. वी ऑल नो DPSP आयरलैंड तो है एंड देन वी कैन इजीली मार्क द आंसर्स. ठीक है जी. ओके, चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਦੇ ਨਾਲ. ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ which of the following is not correctly matched. मैच्ड ऑलरेडी ਕੀਤੀ ਹੋਈ है, इनकरेक्ट मैच ਦੱਸਣਾ है. फर्स्ट languages, 8th schedule. The forms of oath and affirmation, second schedule.
allocation of seats in the Council of State 4th schedule, and then provisions for disqualification on the grounds that is 10th schedule. B. What is wrong in B? Forms of oath and affirmation किस schedule की गल की गई है? जसदीप, राधिका, एब्सोल्युटली करेक्ट. ओथ, ठीक है. बी जड़ा है वो इनकरेक्टली मार्क्ड है, ठीक है. ओथ वास्ते इज इट सेकंड शेड्यूल? इट इज थर्ड शेड्यूल. करेक्ट. ओके, चलो चलिए अगले क्वेश्चन देते हैं. इफ यू आर लाइकिंग द सेशन, एक बार लाइक बटन प्रेस कर दो एंड देन वील मूव ऑन. Consider the following statement with reference to secularism in India. Secularism means that state has no recognized religion of the state. Then secularism means that state treats all the religions equally. Third, secularism means that state regulates the relation of man with the God. Correct statement dasni hai usi. 1 and 2. B. Pulkit says B 1 and 2. Easy question. ठीक है जी. B 1 and 2. Secularism ਦੇ अंडर state ਜਿਹੜੀ है relation between man and God ਨੂੰ regulate नहीं करती. ठीक है जी. Okay. चलो. Consider the following statement. The silent features of Indian Constitution provides for. Indian Constitution ਦੇ silent features ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ question ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ silent feature correct choose करना है. First है single citizenship for whole of the India. Second, strictly federal form of government, then unique blend of rigidity and flexibility. 1, 2 and 3, then 1 and 2 are correct, 2 and 3, and then 1 and 3 are correct. 1 and 3 की Indian Constitution strictly federal नहीं है. Federal form of government यानी कि division of power है. So supremacy Constitution दी. Rigidity no. Okay, correct. Answer is D. 1 and 3 are correct. Indian Constitution is not a strictly a federal government. ठीक है. Federal and unity government का एक blend है. ठीक है. Constitution दी supremacy है. ये भी एक feature किदा है. Silent feature of Constitution है about federalism. ठीक है. Strictly federal नहीं है, blend है federalism and unity दा. ठीक है. Quasi federal, absolutely correct. Next question. The following are enshrined in preamble of the Constitution of India. ਤੁਸੀਂ correct chronology ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ arrange ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ Indian preamble ਵਿੱਚ ਇਹ words ਆਪਾਂ ਕਿਸ chronology ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. Equality of status and opportunity, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, justice, social, economic and political, fraternity, assuring the dignity of individual, unity and integrity of the nation. Correct chronology which ਤੁਸੀਂ preamble ਵਿੱਚ appear ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ words ਨੂੰ arrange करना है. ठीक है. So options 5 1 2 4 3, 3 2 1 4 5, 2 1 3 1 2 5 4 and then 1 2 4 3 5. D 3 2 1 4 5 यानी कि B. Okay. So correct answer to this question is B 3 2 1 4 5. Justice. Then it talks about liberty. Then it talks about equality. And then it talks about unity. And then finally talks about fraternity. Okay. चलिए. Let us move to next question. The preamble of Constitution is. Preamble of Constitution बारे correct statement जड़ी हो तुसी मैंने दसनी है. First, not a part of Constitution. B, part of Constitution but neither confers any power. ना किसी दे ऊपर कोई ड्यूटी लगांदा है. Nor it can be used in interpreting any provisions of the Constitution. Constitution दे provisions ਨੂੰ integrate ਕਰਨ ਲਈ use नहीं हो सकता. Then part of Constitution and can be used in interpreting other provisions of the Constitution in case of ambiguity. अगर कोई conflict arise ਹੁੰਦਾ है ਤਾਂ ਅਸੀਂ preamble ਨੂੰ use कर सकते हैं as a part of Constitution. D, a part of Constitution and confers powers and duties impose करता है on the Constitution of India. Okay, C answer आया है correct. I think कोई confusion नहीं है.
ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन दा पार्ट है एंड इन केस एनी एम्बिग्यूटी अराइज होंदी है इट कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत क्लोज स्टेटमेंट सीगियां बट आई थिंक मोस्ट ऑफ यू कुड मेक आउट। नेक्स्ट, which of the following statement is correct? The preamble of Indian Constitution declares the resolve of people of India to secure all its citizens. First, freedom of residence anywhere in country, right to establish and administer educational institutions of choice. Third statement, liberty of belief, faith and worship. And D statement, right to education at primary level. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਨਸ਼ਰਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਆਫ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ किस स्टेटमेंट वाले दसदा है? सी लिबर्टी। ओके, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस इन एनीवेयर इन द कंट्री किदा पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एनीवेयर इन द कंट्री, it is a part of fundamental right. Absolutely correct. Article 19. Okay, right to education at primary level, what is this? Which article? Education at primary level and then education institutions ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ by minorities. ਇਹ minority ਦੇ ਨਾਲ related ਕਿਹੜਾ article ਹੈ? 21A related to education. Okay, minorities ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ article related ਹੈ? Right to set up educational institutions by the minorities of the country. 30 minority ਨਾਲ related है. Okay, Indian Constitution minorities declare करता है दो basis दे उत्ते, है ना? It can be, I'll give you options, linguistic है, religion है, culture है, ठीक है, and geographical divisions है. इन्हां चारा options विचों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जी माइनॉरिटी डिक्लेयर करता है वो किहड़े बेसिस है? केवल दो बेसिस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जी माइनॉरिटीज डिक्लेयर की जाती हैं. व्हाट आर द टू बेसिस? लेट अस सी कौन आंसर करता है. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म इकोनॉमिक जस्टिस इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया is a resolution of equal distribution of wealth, economy in administration of justice, socio-economic revolution, and D, chief justice to the poor. Okay, linguistic and culture says Pulkit Madan and Parveen says religion and language. दो basis है. It is only linguistic and religion basis. Culture नहीं है, geographical division नहीं है. Indian Constitution में सिर्फ दो basis है, that is language and religion. ठीक है? Okay, दसो जी. Socio and economic justice. Right answer to this question is A, equal distribution of wealth. Economic justice, economy the term with justice जेड़ा है provide किया जाएगा. So that means equal distribution of wealth will be done within the country. ठीक है? A is correct answer. कुछ mix of answers मैंने मिले सी के. I hope it is clear to you now. ठीक है जी? Next, the states of Indian Union can be reorganized and or their boundaries be altered by. Article 3 ਜਿਹੜਾ है state the boundaries the alteration etc ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ है. ठीक है? So correct statement ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ. Union Parliament by simple majority in the ordinary process of legislation. Second, 2/3 of majority required है दोनों houses of parliament दी. Third, 2/3 of majority required है both houses of the parliament and consent of legislature of the concerned states भी required है. And then D statement, the executive order of union government with the consent of concerned state government. October the current affairs are going to happen this Sunday. Jasdeep Kaur, last week we could not take the classes. October the current affairs will be discussed on Sunday morning. Okay, 10:30. Simple. A. Okay, correct. Union Parliament by simple majority in the ordinary process of legislation जेड़ा है boundaries ਨੂੰ alter कर सकता है. ठीक है? So अगर boundary ਦੀ alteration हो रही है then it is not considered as a part of constitutional amendment. Article 368 ਦੇ तहत नहीं होती. Simple majority ਦੇ ਨਾਲ ordinary process of legislation ਨਾਲ this is done. ठीक है?
डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, सो ए करेक्ट। ठीक है जी, ओके। अगर आर्टिकल 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਆਰਟੀਕਲ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਇਰ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਰ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਗਿਵ ਮੀ ਦ ਆਂਸਰਸ ਇਨ ਕਮੈਂਟਸ। ਆਈ ਐਮ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस करेक्ट, प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड है, स्टेट्स को भी जाएगा लेकिन स्टेट्स द कंसेंट इज नॉट वेरी कंपल्सरी। ठीक है जी, ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटेन्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 has been incorporated in the constitution of India in the year 1950 as fundamental rights, directives, principles of state policy, then fundamental duties and emergency provisions. Very simple. Recommendation of president, it is prior permission of president, recommendation नाल दी जाए, it is prior permission of president। ठीक है। B, DPSP, directive principles of state policy, instruments of instructions पढ़ते ही we can easily mark, no second thoughts। ठीक है जी, ओके। शेड्यूल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किधर नाल डील करता है? शेड्यूल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फटाफट आंसर्स दिया करो, रिवीजन क्वेश्चन दे। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट chronological order in which the following states of Indian Union were created, या फिर इन्हां नूं statehood प्रोवाइड किया गया सी? शेड्यूल्ड एरियाज एब्सोल्युटली करेक्ट, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, हरियाणा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आप पॉलिटी स्टार्ट करते हैं, स्टेट्स दी क्रिएशन दे ईयर्स अकॉर्डिंग टू ईयर्स तुसी chronology विच अरेंज करना है। शेड्यूल एरियाज करेक्ट है जी, आर्टिकल सॉरी शेड्यूल 5 द, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। गो ऑन, आंसर्स दो। आई थिंक आंध्र प्रदेश दा सारे नूं पता होगा, दिस वाज द फर्स्ट क्रिएटेड स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, 1342, ओके 3142। आंध्र प्रदेश किस साल क्रिएट किया गया सी? 1953। नागालैंड वाज इन 1324। Parveen has answered 1324. Nagaland was in 1963. 1960 which Maharashtra was created. Okay, Bombay divide किया गया सी Maharashtra and Goa. And then Haryana it was in 1966. So with this answer becomes C, 1324. बहुत कट आंसर्स मिले हैं मैंने 1324 वाले। Okay. सब तो पहला आंध्र प्रदेश was created. Why is there a confusion between this? First सब तो पहले नंबर पे है। ठीक है जी, okay. I'll move on to the next question. Consider the following statement with reference to linguistic reorganization of states in independent India. Independent India which बहुत ज़्यादा बहुत सारे 1953 absolutely correct. I don't know why I've got the wrong answer. आंध्र प्रदेश तो ही तक कहानी शुरू हुई सी, सो वाई रॉन्ग आंसर्स? 3 पता नहीं, कोई पहले 3 दस रहा है, कोई पहले 4 दस रहा है, 1 तो एब्सोल्युटली सिंपल सी, तुसी इजीली मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट, लिंग्विस्टिक बेसिस दे उत्ते स्टेट्स दी रीऑर्गेनाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया दे बारे करेक्ट स्टेटमेंट। A separate state of Andhra of Telugu people came into existence in 1953. Read this statement. This is right statement. पिछला question इधर related सी। Next, Jawaharlal Nehru was particularly in favor of movement of linguistic organization that came in the wake of success of Andhra movement. Okay, Pulkit says C, both the statements are correct. Okay. Was Jawaharlal Nehru in favor of creating linguistic state? No. Jawaharlal Nehru favor ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। Okay. ਹੁਣ statehood ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। Yes, he was not in favor. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ धार कमीशन was set up 1948। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद आ रहा है मैनू, देयर वाज रिटन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਸਮ ਕੁਐਸਚਨ।
सो धार कमीशन सब तो पहले सैटअप की गई सी है ना 1948 विच डिड इट एक्सेप्टेड धार कमीशन ने एक्सेप्ट कीता सी लिंग्विस्टिक स्टेट्स दी क्रिएशन नु या रिजेक्ट कीता सी धार जेवीपी एंड फजल अली एब्सोल्युटली करेक्ट तीन कमीशन सी की नो ठीक है नो आंसर आ गया आई होप जिन्हां नु नहीं पता सी धार कमीशन ने रिजेक्ट कीता सी धार कमीशन तो बाद आई सी जेवीपी जेवीपी ने रिजेक्ट कीता सी या एक्सेप्ट कीता सी लिंग्विस्टिक क्रिएशन ऑफ स्टेट्स नु जेवीपी आल्सो रिजेक्टेड करेक्ट ओके उस तो बाद कुछ अपराइजिंग करके 1953 विच आंध्र प्रदेश वाज फॉर्म्ड ठीक है फजल अली कमीशन ने रिजेक्ट कीता सी या एक्सेप्ट कीता सी आफ्टर जेवीपी केम फजल अली है ना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फजल अली ने एक्सेप्ट कीता सी ओके इट एक्सेप्टेड लैंग्वेज लेकिन उन्होंने वन लैंग्वेज वन स्टेट दा प्रिंसिपल रिजेक्ट कीता सी ठीक है लैंग्वेजेस दी क्रिएशन दे उत्ते स्टेट्स वर फॉर्म्ड आफ्टर फजल अली कमीशन लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट दे प्रिंसिपल नु रिजेक्ट कीता गया सीगा ओके आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तुहाडा तीन कमीशंस केड़े-केड़े पैरामीटर सी किवें रिजेक्ट कीता गया एंड देयर ईयर्स कर्नोलॉजी ठीक है समझ आ गया तो सेशन नु लाइक कर दो थम्स अप दे दो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अनलाइक habeas corpus mandamus cannot be issued against private individuals. Second, mandamus cannot be issued to enforce a contractual obligation. One only, two only, both one and two, and then neither one nor two. Read the statements very very carefully. Habeas corpus है जो सी body ਨੂੰ present ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ फरमान जारी किया जाता है to present the body against ओके ठीक है जी थम्स अप आ गए थैंक यू सो मच सो हैबिस कॉर्प्स एंड मैंडामस दो रिट्स दे बारे तुहानू बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अनलाइक हैबिस कॉर्प्स मैंडामस जिहड़ी है इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट मैंबर्स यानी कि मैंडामस जिहड़ी है उन्होंने असी प्राइवेट इंडिविजुअल दे अगेंस्ट कर सकते हैं वेयर एज हैबिस कॉर्प्स नूं असी प्राइवेट दे अगेंस्ट नहीं कर सकते Okay, Rolly says both are correct. Okay. C, absolutely correct. जिन्हां दा आंसर both है, they are absolutely correct. Mandamus जिहड़ी है उसी contractual obligations. इहदा मीनिंग की है we command यानी कि कमांड करना जदों कुछ स्पेसिफिक ड्यूटी या टास्क परफॉर्म किया नहीं जा रहा इट कैन नॉट बी इशूड असी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लीगेशन है प्राइवेट पर्सनस है उन्होंने असी ये रिट उन्होंने अगेंस्ट जारी नहीं कर सकते ठीक है whereas habeas corpus पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों दे अगेंस्ट इशू की जा सकती है ठीक है जी एक क्वेश्चन बड़ा आता है बार बार सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू कि केड़ा प्राइवेट दे अगेंस्ट किया जा सकता है केड़ा नहीं किया जा सकता ओके चलिए अगले क्वेश्चन दे उत्ते ओके Which of the following are enshrined by the right against exploitation in the Constitution of India? Prohibition of traffic in human beings and forced labors, abolition of untouchability, protection of interest of minority, then employment of children in factories and mines is prohibited. Right against exploitation. 1 and 4. Okay, right against exploitation, the article केड़ा है? 1 and 4 is absolutely correct. Right against exploitation द केड़ा आर्टिकल है वॉर स्टार्ट आई थिंक जस्ट करण इज वेरी अपडेटेड विद द मॉर्निंग न्यूज करंट अफेयर्स जो सुन के आ रहे हैं ओके 1 and 4 okay 23-24 right abolition of untouchability and protection of interests of minority दोनों केड़े आर्टिकल्स नाल रिलेटेड है करेक्ट 23-24 जिन्हां दा भी आंसर है एब्सोल्युटली करेक्ट थम्स अप टू यू abolition of untouchability and minorities ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ different rights ਨੇ different articles ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ठीक है they are not a part of right against exploitation okay untouchability is article 17 and minority wala is article which article हरप्रीत कौर 23-24 correct है minority 29-30 okay it is 30 ठीक है okay एक आर्टिकल है दैट एबॉलिशेस टाइटल्स एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स जेड़ा है वो किस आर्टिकल दे नाल रिलेटेड है
गिव मी द आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन तुसी मार्क करने हैं रिट्स ऑन द ग्राउंड्स habeas corpus, mandamus, quo warranto, certiorari, and here are the grounds. Non-performance of public duties, unlawful detention, correctional directions to subordinate courts, and then unlawful occupation of public offices. Article 18, correct. Abolition of titles. The here are the codes for you जिमें तुसी match करना है. I'll move back to the previous slide. Here. Okay. List ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ. Writs are a very important part. So writs ਕਿਹੜੇ grounds ਦੇ ਉੱਤੇ issue ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ. Again I will be displaying the options in front of you. ਇਹ options ਨੇ. You can take a minute and give me the answers. B पहला आंसर आया है. Okay. 2143. Oh, sorry. 2143. Habeas corpus, unlawful detention. Mandamus, non-performing of fundamental non-performance of public duties. Quo warranto, unlawful occupation of public offence. Certiorari, correctional direction to the subordinate courts. Okay, so most of you have given me the right answer. That is B, 2143. Correct. Next question. As far as armed forces are concerned, the fundamental rights granted under Article 14 to 19 of the Constitution are not available at all, available to armed forces but not to other forces, available only at the discretion of Chief of Army Staff, available only according to law made by the Parliament. Armed forces ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ Article 33 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. Armed forces and available fundamental rights. ठीक है. So ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ fundamental rights available ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? Is it not at all available? या फिर सिर्फ armed forces ਨੂੰ available है बाकियों ਨੂੰ नहीं available? Discretion of chief of army staff and then discretion of parliament. Okay, दो आंसर्स आए हैं. 3 4. Okay, correct. ठीक है. Available only according to law made by the parliament. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ state legislation assembly ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ say नहीं है. ठीक है. Even if anyone is working as a barber, housekeeper under this Armed Forces Act ਤਾਂ ਉਹ law ਜਿਹੜਾ parliament ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ applicable ਹੋਏਗਾ. ठीक है जी. Article ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ when we talk about armed forces and fundamental rights? Article ਕਿਹੜਾ ਹੈ? Article is 33. ठीक है जी. Okay, correct. गोविंद, रोहित, हरप्रीत. Okay, correct. चलो next question. Consider the following which of the following statement is correct about the writ of prohibition? It is an order issued by the higher court commanding the lower court to cease from proceeding in some matters not within its jurisdiction. It can be claimed by an aggrieved party as a matter of right. Simple question. Good morning Rohit. Very good morning. Welcome to the session. दसो जी prohibition ਦੇ ਬਾਰੇ correct statement. Prohibition the literal meaning है prohibit करना. One only. Okay. ਜਿਹੜੇ one only कह रहे what is wrong in statement B? It can be claimed by aggrieved party as a matter of right. Fundamental right ਦਾ part नहीं है. It cannot be claimed. Geet, Rohit, Pulkit. Okay. Why one only? Can it not be claimed? Exercised by the higher court. Claim ਦਾ meaning है कि ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ relief ਮਿਲੇਗਾ. Aggrieved party ਇਹਦੇ ਤੋਂ relief ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ. Exercise ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ. It is C. Both the statements are correct. Aggrieved party ਇਹਨੂੰ as a matter of fundamental right. It is a part of fundamental right, constitutional remedies. ठीक है. Exercise ਦੀ ਗੱਲ नहीं हो रही. Claim ਦੀ ਗੱਲ हो रही है. ठीक है जी. I hope the concept is clear. चलिए next question थे. Okay, correct. English थोड़ी जी ध्यान नाल पढ़नी है. ठीक है. Exercise ਦੀ ਗੱਲ नहीं हो रही. Okay. ਇਹ ਦੱਸੋ कि ਜਿਹੜੀ prohibition है ਇਹ प्राइवेट इंडिविजुअल्स क्लेम कर सकते हैं, प्राइवेट बॉडीज क्लेम कर सकदियां है या नहीं?
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पढ़िए कि केड़ी रिट जेडी है वो प्राइवेट के अगेंस्ट अवेलेबल है, पब्लिक के अगेंस्ट अवेलेबल है, ओके, जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल के अगेंस्ट है, इट इज अवेलेबल टू प्राइवेट बॉडीज और नॉट, नो, करेक्ट, इट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द प्राइवेट बॉडीज, जो लोअर कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन ਨੂੰ एक्सीड करता है then it is undertaken. Next, consider the following statement, the state under article 12, article 12 of Indian constitution ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ state ਨੂੰ define ਕਰਦਾ ਹੈ, so ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ parts ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ state ਦਾ part ਨੇ according to the definition as given in article 12. Government and Parliament of India, the government and legislature of state, local authorities or other authorities within the territory of India or under the control of government of India. 1, 2, 3, 1 and 2, 2 and 3, and then 1 and 3. Okay, all 1, 2 and 3. For example, LIC हो गया, it is also considered as a part of the state. Okay, I hope no confusion. State कौड़ी केड़ा article define करता है? Article 12. Correct? चलो जी अगले क्वेश्चन पे मूव करिए. Assertion ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ education is a fundamental right for every child between the age of 6 to 14 years. Reason ਦਿੱਤਾ ਹੈ the 84th constitutional amendment act ਜਿਹੜਾ ਹੈ it provided right to education. ठीक है जी, statements ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, both a assertion and reason individually true ne, but and reason is right explanation to assertion. Both assertion and reason are individually true, but reason is not correct explanation of a, yani ki assertion. Assertion is true but reason is false, assertion is false but reason is true. Okay, A is true but R is false because it was not 84th, it was 86th amendment 2002. It is not 84th, it is 86th. ठीक है जी, ओके, जो 86th अमेंडमेंट होया तो साडे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज दे विच कुछ चेंज आया. व्हाट वाज द चेंज इनकॉर्पोरेटेड जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया? गिव मी द आंसर्स, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटेड in article 25 of constitution is subject to which of the following? Right to religion provide किया जाएगा but subject to, यानी कि certain restrictions are imposed. key restrictions ने public order, morality and to the other provisions of part 3 of constitution of India, public order, morality and health, reasonable restriction in the interest of security of state, public order, morality and health, and to the other provisions of part 3 of constitution of India. 11th duty was added, correct, under article 51, and then article 21A was added in fundamental rights, correct, very nice. Daswa ji, article 25 right to education de तहत what are the reasonable grounds where the restrictions can be imposed? B, Rowley and Thakur say B. Okay, any more answers? किसी का कोई और आंसर B तो अलावा तो नहीं है? आर्टिकल 25 ही तो बोले मैं. No, I am talking about the previous question. 21A. Okay, B, absolutely correct. It is B, public order, morality and health. These are the reasonable restrictions that can be imposed on this religion. Okay, sorry, not education, आप religion की गल कर रहे हैं. ठीक है जी, next question. Which one of the following is correct statement? Writ of mandamus can be issued against the legislation for making law, for non-performance of public duty, for exercise of discretionary powers, for deciding legality of an arrest. B was correct, absolutely correct. दसो जी, इस correct statement writ of mandamus के बारे में दिता गया है. B, to perform, okay, for performance of a public duty. Dimple Agarwal, Pulkit, Parveen, correct. ठीक है जी, no explanations needed. Mandamus, we command, right?
public duty performance. Okay. Next question. Under the provisions of Indian Constitution, a community can be declared as minority community on the basis of, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ that Indian Constitution ਜਿਹੜਾ ਹੈ minority declare ਕਰਦਾ ਹੈ on the two bases, religion only, either religion or language, either language or caste, either religion or race. B, religion or language. ठीक है जी. So ये दो ही bases ने linguistic minority declare ਕਰਨ ਦੇ. It is language and religion. ठीक है, ਜਦੋਂ option ਵਿੱਚ culture ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ culture ਵੀ right mark ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, but no, it is not culture. ठीक है, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ answers ਆਏ ਸੀ culture ਦੇ. Next question, which of the following is not a correct description of directive principles of state policy? These are not enforceable by the courts. Directive principles have a political sanction. Directive principles are declaration of objectives of state legislation. Directive principles promise equal income and free healthcare for all Indians. ਦੱਸੋ ਜੀ, directive principles ਦੇ ਬਾਰੇ which of the following is not a correct description? DPSP. D. Okay, Anjali says it is C. Pulkit, D. Dimple says D. Correct. Directive principles ਜਿਹੜੇ ਹੈ equal income and free health care to all Indians promise नहीं करते. Correct. बाकी सारे parts they are not enforceable by laws, have political sanction, and directive principles ਜਿਹੜੇ है they are objectives of the state legislature. ठीक है जी. Most of you have given the answer D right. ठीक है जी. अगले question पे move करते हैं. Which of the following is or are among the directive principles of state policy? The state shall strive to promote science and technology for development. State shall endeavor to secure for the citizens a uniform social code, uniform civil code throughout the India, article 44 है. And then तीसरी statement है, state shall try to develop population policy and family planning programs. Fourth, state shall take steps to promote tourism. Read the statements very, very carefully. C, 2 only. D, Pulkit says D, सारे. Dimple, Rohit also says C. Okay, okay, D and C are answer. State shall promote tourism is not a part of DPSP. Strive to promote science and technology development, not a part of DPSP. Uniform Civil Code था है ये article 44. DPSP shall try to develop population policy and family planning program. बाकियां which confusion सीगी, तब tourism is not a part of it. You can easily eliminate two other options. ठीक है, population policy and family planning ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ DPSP ਦੇ ਵਿੱਚ. ठीक है, it is two only. Correct. Article 44, Uniform Civil Code. Correct. Next question. Consider the following statement. Central Information Commission is a high-powered independent body. Central Information Commission is a constitutional body. One only, two only, both 1 and 2, and then neither 1 nor 2. Central Information Commission. It was formed in 2000. कितने साल form की गई थी? Ashish says both are correct. Is it a constitutional body? Answer to this question is A. It is not a constitutional body. केड़ी body है? It is a statutory body. ठीक है जी? I hope this is clear to you now. It is a statutory body and not a constitutional body. Chief Information Commission, Central Information Commission. Next question. State Chief Information Commission holds office for 5 years or until the age of 65, whichever is earlier. 5 years or until the age of 70 years, whichever is earlier. 6 years or until the age of 70 years, whichever is earlier. 6 years or until the age of 65, whichever is earlier. Read the question carefully. Election Commission da nahi puch rahe tanu.
कमलप्रीत सिंह सेज ए, यानी कि 5 years और 65. ओके, बहुत कट आंसर सही आया. इट इज 5 years और अंटिल द एज ऑफ 65 years, विच एवर इज अर्लियर. चीफ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, ए इज राइट आंसर. रेयर आंसर मिला है. ऑल्सो जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. ठीक है जी, रीअपॉइंटमेंट वास्ते भी एलिजिबल नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द यूनियन एग्जीक्यूटिव consists of president, vice president, Lok Sabha speaker and council of ministers, president, deputy chairman of the Rajya Sabha, the Lok Sabha speaker and prime minister, then president and council of minister, and then we have is the president, the vice president, council of ministers and prime minister for the aid and advice. Conditional post generally 6 years, but constitution mentions it for 5 years or 65 years. ठीक है, whichever is earlier. D, president, vice president, the council of minister and prime minister for aid and advice. Correct? I hope ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ confusion नहीं होएगी. Okay, चलो, let us move to the next question. The impeachment of president of India can be initiated in either house of the parliament, joint sitting of both the houses, Lok Sabha alone and then Rajya Sabha alone. Impeachment of president किस house which initiate की जा सकती है? Either house. Dimple, Rohit, Radhika, correct. Either house of the parliament which impeachment of president can be done. I hope ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी explanation की requirement नहीं है. You can easily mark the answers. ठीक है, next question. In the event of occurrence of vacancies in the offices of both president and vice president of India, president the functions कौन पूरे करेगा? Speaker of Lok Sabha, leader of majority party of Lok Sabha, Chief Justice of India and then senior most governor. We know when president is not available in the office, then vice president duties perform करता है. So question पूछा जा रहा है, अगर दोनों offices vacant है, तो who will perform it? CJI, Chief Justice of India. Correct. Very nice. Next question. Consider the following statement regarding the president. He may resign by writing to the vice president. He shall continue notwithstanding the expiration of his term to hold the office ਜਦੋਂ तक successor office which enter नहीं कर जाता. Third statement, he is not entitled to hold office for more than 2 years. Read the statement very very carefully. President ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ information ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. So which is the correct information regarding president? First option easily mark कर सकते हो. Okay. So first option तो मैं ही ठीक कर देता. Okay. Tell me the answers. 1 and 2 only. Okay. Correct. 1 and 2 only. He is entitled to hold office. There is no bar on the time limit. जितनी देर तक president अपना office होल्ड कर सकता है. ठीक है, ही कैन बी इलेक्टेड फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स. करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. जिन्होंने कल दा लाइव अटेंड किया सी उन्हां वास्ते क्वेश्चन एक रिवीजन होने वाला है. हिंदी चैनल ते अटेंड किया सी, उत्थे मैं MCQ कराया सी. आई वांटेड टू डिस्कस दिस MCQ हेयर आल्सो. ठीक है, यस एग्जैक्टली, नो डिफाइंड टाइम. सो हेयर, which of the following are the socialist principles of directive principle of state policy? State to secure a social order for promotion of welfare. State shall strive to secure equal justice and free legal aid. State shall endeavor to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines. 1 and 2, 2 and 3, and then we have is 1, 2 and 3. Yes, in US it is only 2 times. इतना US का provision दिता सी, that is why ये wrong हो गया. Okay. B आंसर आया है 1 and 2 and all भी आ रहे आंसर. We all know DPSP दी डिवीजन की गई है लिबरल, गांधीयन, इंटेलेक्चुअल एटसेट्रा. कॉन्स्टिट्यूशन नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्स्ट असी डिवीजन करते हैं, है ना. सो ਜਿਹੜੇ डी वाले ने वो गलत ने. आंसर इज बी 1 and 2. कल आप एक हिंदी चैनल ਦੇ ਉੱਤੇ पॉलिटी ਦਾ मैं लाइव अटेंड करवाया सी. ठीक है, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ एनिमल स्लॉटर ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, दैट इज अ पार्ट ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल.
ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ DPSP ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ, ठीक है जी। ए जेड़ा है दिस इज नॉट सोशलिस्ट, दिस इज लिबरल, ओके करेक्ट। आई होप दिस कंफ्यूजन इज ओवर। अगर एनिमल स्लॉटर की गल हो जाए दैट इज अ पार्ट ऑफ सोशलिस्ट और गांधीयन प्रिंसिपल, लेकिन साइंटिफिक की गल हो रही है साइंटिफिक लाइन से डिवेलप करने दी, इट इज अ पार्ट ऑफ लिबरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंटेंडेड टू सर्व एज अ रिमाइंडर टू स्टेट टू परफॉर्म ड्यूटीज conferred by the constitution, judiciary to administer justice properly, every citizen to observe basic norms of democratic conduct, D, legislature to make laws for the welfare of the people, C, every citizen to observe basic norms of the democratic conduct, correct, absolutely correct, ठीक है जी। fundamental duties, with this I end the session for the polity MCQs। I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੋ देयर इज गोइंग टू बी अ क्विज। ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਗਿਵ ਮੀ ਦਾ ਆਨਸਰਸ ਆਫਟਰ ਦ ਲਾਈਵ ਐਂਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਨ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 92nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਡਿਡ ਨਾਟ ਐਡ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫॉलोइंग ਲੈਂਗੁਏजेस, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰਸ ਨਾ ਦਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ट्रू रिगार्डिंग कैग ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, these are the options in front of you, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, स्टेटमेंट दित्तियां हैं, ऑप्शंस ਤੁਹਾਡੇ सामने है, ओके। सो 3 क्वेश्चन सीगे MCQs ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੈ। with this I end the session and reminder 12 ਵਜੇ ਐਗਜ਼ੈक्टली almost half an hour ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਂਚਪੈਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਓ ਐਂਡ ਵੀਲ ਬੀ ਡਿਸਕਸਿੰਗ द बेसिक वन लाइनर्स रिलेटेड टू पॉलिटी, ਤੁਹਾਡੇ कुछ बेसिक्स ਜਿਹੜੇ ਉਹ रिवाइज हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स, ओके। एंड डोंट फॉरगेट क्विज ਦੇ आंसर्स ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਚ ਦੇਣਾ, these are for you only। बहुत दिन तो ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, क्विज नहीं कर रहे ਸੀਗੇ, ठीक है जी। so give me the answers in quiz and your feedback। thank you everyone for being there, see you at 12 on launchpad education hindi channel, okay, bye।